Hello friends, welcome to the yet another video of Pratham Test Prep. My name is Nikhil. We are shooting this video to show you the process of filling up the form for the Oberoi group, which is the STEP program. Students who are targeting or aspiring to get into the industry of hotel management or the hospitality industry, you guys can fill this form. There are a lot of students across India whose first target is to get into the Oberoi group. देर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं कि मैं ओब्रॉयज़ ग्रुप को ही टारगेट करूं, ओब्रॉयज़ ग्रुप में ही मेरा एडमिशन हो जाए. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया में जो चाहते हैं कि इसमें जाऊं. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स फर्दर इन द फर्दर वीडियो कि क्यों इसको लोग अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी लेके चलते हैं. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टॉक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वुड लाइक टू शेयर. गाइज, जो स्टूडेंट्स होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने और कॉलेजेस ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं. अगर आप बात करो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बॉयसिस यूनिवर्सिटी और मणिपाल यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी काफ़ी पहले रिलीज़ कर दिए हैं. गाइज, NCHM-CT जो कि IHM के लिए होता है, उन लोगों ने भी ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं. अगर आपने अभी तक ये वाले फॉर्म्स नहीं फिल किए हैं, यू गाइस कैन टेक आवर हेल्प. हमारी यूट्यूब चैनल है विच इज़ प्रथम टेस्ट प्रेप. आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखकर अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिल करने में और कोई गलती हम लोग फिल करने में ना करें. गाइज, वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर एक भी गलती हो जाती है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, इट माइट हैपन और फॉर्म गेट्स रिजेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी. सो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन इन्फॉर्मेशंस को क्रॉस चेक कीजिए, देखिए कि क्या आपने गलती किया है, एंड देन फाइनली सबमिट दैट particular form. Now, before I take you to the process of filling up the form, there are a few important points which I'll be discussing. Talking about the Oberoi program, it was launched in the year 2004, so it's been long time. काफ़ी साल से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं. नाउ, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर कि क्यों इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स बनाते हैं. लाइकवाइज अदर यूनिवर्सिटीज़ में हमको अपना प्रोग्राम्स के लिए फ़ीस देना होता था. देयर इज़ अ फीस स्ट्रक्चर फॉर ऑल दी कॉलेजेस एंड और द यूनिवर्सिटी. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू द ओबरॉयज़ ग्रुप. इनफैक्ट ओबरॉयज़ ग्रुप आपको स्टाइफंस पे करता है, आपको मेडिकल अलाउंस देता है, आपको बाकी मंथली अलाउंस देता है टू वर्क फॉर देम. सो बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स. आपको जिसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे नहीं करनी है, आपका एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दैट इज़ वाई पीपल कीप इट एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी कि एक बार ओबरॉयज़ में हो गया तो इट्स अ नाइस थिंग टू गो फॉर. इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट द ओबरॉयज़ प्रोग्राम, यहाँ पर आपको जो डिग्री मिलती है दैट इज़ फ्रॉम द IGNOU, एंड एक अलग से सर्टिफिकेट भी मिलता है फ्रॉम द ओबरॉयज़ ग्रुप दैट यू हैव वर्कड फॉर द ओबरॉय और यू हैव बीन पार्ट ऑफ स्टेप प्रोग्राम फॉर 3 years. So basically इसीलिए लोग इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हैं ओबरॉयज़ को, बिकॉज देयर इज़ नो फीस as such for the application or for the program. Now, talking about other things about the program, course offered, the name is the Systematic Training and Education Program. STEP का जो full form है that is the same thing. Now, talking about the eligibility criteria, minimum 70% marks आपके आने चाहिए इंग्लिश में 10th स्टैंडर्ड पर, तभी आप एलिजिबल हो पाते हो. टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट, आपकी एज जो है वो 18 ईयर से 20 ईयर्स होनी चाहिए बिटवीन दिस डेट एज एंड ऑन 15 अगस्त 2021 तक. सो जब उनके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे उससे पहले आपकी एज 18 से 20 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए. ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट अभी रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं 1 अप्रैल 2021 को. लास्ट डेट इज़ नॉट गिवन येट, अभी तक लास्ट डेट का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है. यस, इंटरव्यूज़ की डेट कब से होंगी? अप्रैल एंड से ये लोग अपने इंटरव्यूज़ की डेट देना शुरू कर देंगे, एंड टिल फर्स्ट वीक ऑफ मे तक ये लोग अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे. नाउ, वी हैव ऑलरेडी शेयर दैट देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस एज सच, एंड वी हैव गिवन द फॉर्म लिंक to through which we'll be able to fill the application form. So once we click on the Oberoi group link, it will take us to this particular option wherein we can fill in this information. On the top you can see the date of birth. We need to punch in the date of birth. On the left hand side, if you guys can see, we need to punch in the first name and the surname. We need to punch in the mobile number, the email ID, your father's name, the occupation, your mother's name and the occupation, your father's or mother's email ID. Basically they're asking for the alternate email ID. You need to punch in the alternate mobile number. Maybe you can punch in your father's or your mother's mobile number here. City of residence from where you belong, and
below that, if you see the programs, there are two programs option here, hotel operations and the kitchen operations. So supposingly, if I choose the kitchen operations, I need to select the location where I want to pursue that particular program. Now, if I want to get into the hotel operations, I will be getting these two sub program option, where I have the front office program, where food and beverages services, or the housekeeping. I can keep any one of these option, and then I need to select the region where I want to pursue this particular program. Once I click on this particular option, below that we have to punch in the education information. So on the top option, you guys can see class 12th information, whether appearing or you have passed out your 12th. Your name of the board need to punch in, name of the school, and the subject studied in class 12th. You need to mention that. So what all subjects you had in it was class 12th, you need to punch in that same information. Now here we have the option marks obtained in English and marks obtained overall. So for example, if you are in appearing for 12th standard, you don't have a marks as of now, still you will have to fill this information. If you don't fill, it won't let you to submit the form. So you have to mention the expected marks you will be getting in the English in 12th standard, and the overall percentage you're expecting in 12th. So you can mention that particular thing depending upon what's your target, what is your expectation in 12th standard. Now below that, you need to punch in the same information for 10th as well. Year of completion, those students who are appearing for 12th this year, their year of completion would be 2019 for their 10th standard. Name of the board we need to punch in, name of the school with the subjects, how much you got in English in 10th standard, and overall percentage you can mention here. Now below that, you need to punch in your height and weight and eyesight information, whether it is normal with glasses or with lenses you use. On the right hand side, if you guys can see, the blood group you need to mention. Once you click on the blood group, you will punch in this information. Below that, if you guys can see, achievements and the extracurricular activities, you need to punch in 500 characters. So guys, whatever you have done in your previous non-academic things, you need to punch in those information. Depending upon the credibility of that particular extracurricular activities which you have done, you'll need to mention those particular things. So whatever you have done from 10th to 12th, mention those particular things. Something you have done for a longer time, you can mention that particular thing. For example, I have been playing guitar for 7 years, I can mention that thing. Some MUNs participation, some sports participations, or some medals I have got from the schools or from outside schools. I have done some internships, or I have worked for some company as the internship. I can probably talk about that as well. So whatever non-academic things I have done, I need to punch in the information on the below side. Just below that, if you guys can see, you need to fill in this information. Why do you want to get into this hospitality industry? In 500 words, you need to mention 500 characters. You need to mention why do you want to get into this particular thing. Basically, a kind of SOPs के why what is the reason कि आप क्यों जाना चाहते हो उस चीज़ में, आपको वो चीज़ मेंशन करना होगा. एंड आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एक्सीलेंट गेस्ट सर्विस मीन टू यू. सो अगर आप एक होटल इंडस्ट्री में हैं, सो गेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ होती है, यू नीड टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर थिंग. that is also part of it. So you need to punch in fill in this information to apply for this particular program. Below that, if you guys can see, we need to attach the passport size photograph. We need to click on choose option, and we need to attach the passport size photograph. Once you attach the passport size photograph, it will you need to click on submit options. Once you click on the submit option, it will give you the application number. If you guys can see, the application number we have already received below that, and even the Oberoi will send you the application number on the email ID. So please save that application number so that whenever it is required, you can use that application number, because whenever you're going for the interview, you should have that application number. So that is very important.
So this is how we fill up that form for Oberoi. This is not a rocket science. It's a very easy to fill up that forms. There are few important points which we'll have to remember before filling up that form कि उसमें वो गलती अगर हो जाती है तो application reject हो सकते हैं. So if you still face any problem in filling up the forms, you guys can contact us on the mobile numbers or the landline number given on the left hand side. You guys can contact us from 10 to 7 for any kind of support. Soon we will be creating the videos for other upcoming forms. Likewise अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करना है, हम उसको भी वीडियो बनाएंगे. IP यूनिवर्सिटी ने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करना है, विल बी शूटिंग द वीडियो फॉर दैट टू. गाइस अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उनकी वीडियोज़ को देखिए ताकि आप कोई गलती ना करें फॉर्म फिलिंग के टाइम पर. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट बाकी आपके फ्रेंड्स जो हैं जिनको प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलिंग में और किसी चीज़ में, एटलीस्ट उन वीडियोज़ को देखकर स्टूडेंट्स गलती ना करें. Guys, that's it. So see you in the next video. Thank you. Have a nice day and stay safe.